Hello everyone, very good morning. I hope everyone is good and doing well. So today in the class we are going to solve questions from current, electricity and capacitor. ठीक है? Okay, Sarat, I got your point. ठीक है? I will communicate that with my team. Don't worry. चलो. So previous class में मैंने थोड़ा introduction दिया था, formulas बताए थे, है ना? So you all must be aware of all these formulas. Again, we will go through it while doing questions. ठीक है, यहाँ तक हमने किया था. इनफैक्ट सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशंस भी देखा था हमने, राइट? नाउ अनदर थिंग इज योर व्हीटस्टोन ब्रिज. सो व्हीटस्टोन ब्रिज स्ट्रक्चर इज क्वाइट कॉमन इन करंट इलेक्ट्रिसिटी. डन है? हाउ, व्हाट डज इट लुक लाइक? जैसे there is one register like this, another like this, another like this, another like this. And if there is this arm connected with galvanometer, and there is a battery certain like this, and let's say it has EMF E, its resistance is R1, its resistance is R2, this is R3, this is R3, this is R4. So this structure is called Wheatstone bridge, and there is a particular situation where we call Wheatstone bridge balanced. What does that mean? When Wheatstone bridge is balanced, then there is no no current through the galvanometer. So current through galvanometer is zero in this case, and then we say Wheatstone bridge is what? It is balanced. Done it? And I mean, how you can look at the Wheatstone bridge and say it is balanced? For that, you look at the magnitude of resistance. So for that, R1 by R3 should be equal to R2 by R4. This should be the criteria. ठीक है? चलो. So this is balanced. Same thing you can do for capacitor also. अगर capacitor looks something like this, and you find that C1, this is C2, this is C3, this is C4. Let's say there is also some sort of capacitor here connected. Okay, and such that you find here C1 by C3 is equal to C2 by C4, then you will say that there won't be current in this arm. In that case, there won't be any charge on this capacitor. Okay, then you can consider C1 and C2 are in series, C3, C4 are in series, and they together are in parallel. ऐसे यहाँ करते हैं ना, there is no current. It means whatever is here will be here. It means these two are in series, these two are in series. And R1, R2 in series is in parallel with R3, R4 in series. So that is how we can do with both capacitor and resistors. ठीक है? मीटर ब्रिज एक स्ट्रक्चर है. मीटर ब्रिज में कैसा दिखता है? It is basically used to calculate unknown resistance. So यहाँ पे दो metal clamps होते हैं. ठीक है? One metal clamp is like this, and here what? Standard or unknown resistance register is connected, and then this there is another metal clamp, and here what is connected? Here standard resistance is connected. यानी कि register whose resistance value is known, that is connected here, and then there is R, and then there is unless not given in the question, there is 1 meter long wire. अगर क्वेश्चन में वायर के बारे में कुछ बात नहीं करा है, then you have to assume this is 1 meter long. So there is 1 meter long wire, then there is galvanometer, and then there is jockey. To calculate the value of R, we move jockey on this wire AB till we get a null point. ठीक है? So till the time we will get a point where there will be no current in the galvanometer. So again, it will look like something like a balanced Wheatstone bridge. क्योंकि यहाँ पे देखो, suppose कर लो null point O पे मिला, so OA will have certain resistance, है ना? Let's say it has a resistance of RAO. OB will have certain resistance, let's say ROB. ठीक है? So if there is no current in the galvanometer, then you can say R by RAO is equal to R by ROB. And since resistance it is directly proportional to the length, so RAO का value नहीं given है. This RAO can be written as rho L. L length कितना है? OA divided by area of cross section of this AB wire.
ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, रो इंटू ओ बी डिवाइडेड बाई ए, क्योंकि दोनों वायर का रेजिस्टिविटी एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज सेम। सो यहाँ से दिस इज आर एस, सो आर बाई ओ ए इज इक्वल टू आर एस बाई ओ बी। ठीक है, अगर आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है दिस इज द लेंथ ऑफ वायर इज एल, and if you assume this is L1, then you can write here like R by L1 is equal to RS by L minus L1. So this is how we use Wheatstone bridge. ठीक है, इससे क्वेश्चन एक दो दिखते हैं. Now ammeter and voltmeter. So what is ammeter? Ammeter is basically galvanometer getting used to measure current in the circuit. How we connect ammeter in our circuit? We connect ammeter in series. जैसे अगर मेरे पास एक ऐसा सर्किट है और इसमें मुझे करंट मेजर करना है, सो आई विल कनेक्ट अमीटर इन सीरीज. डन है. सो अमीटर का काम क्या है, करंट को मेजर करना. वी कनेक्ट अमीटर इन सीरीज फॉर मेजरिंग करंट. एंड इफ वी हैव टू यूज वोल्टमीटर, वोल्टमीटर का फंक्शन क्या है, टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस. अगर मुझे आर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है, वी नीड टू कनेक्ट वोल्टमीटर इन पैरेलल विद द रजिस्टर. ठीक है, सो अमीटर को हम यूज करते हैं सीरीज में कनेक्ट करते हैं मेजर करने के लिए. वोल्टमीटर वी कनेक्ट इन पैरेलल. नाउ व्हाट डज अमीटर लुक लाइक? सो अमीटर कैसे बनता है, वी कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर इनटू अमीटर, एंड फॉर दैट व्हाट वी डू, वी कनेक्ट अ शंट रजिस्टर, वेरी स्मॉल रजिस्टर इन सीरीज, जिसको हम एस से भी इंडिकेट करते हैं, इन पैरेलल सॉरी. ठीक है, सो दिस होल सेटअप विल लुक लाइक व्हाट, अमीटर. डन. And I mean, whatever current is there in the circuit, let's say here current in the circuit is I, so I will come here, and some amount of current will go to the galvanometer. If galvanometer is showing full deflection, then full deflection current will go there, and that is indicated by letter Iz, and rest current will go here, I minus Ig. ठीक है, so अगर तुम्हें क्वेश्चन में दिया है आई जी का वैल्यू एंड यू हैव टू कैलकुलेट एस, यू आर ऑल्सो गिवन आई. सो हाउ यू कैन डू दिस एस एंड जी आर इन पैरेलल. लेट्स से गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस आर जी है, सो वॉट एवर पोटेंशियल डिफरेंस इज अक्रॉस जी, सेम पोटेंशियल डिफरेंस इज अक्रॉस एस, बोथ आर इन पैरेलल. सो आई माइनस आई जी इंटू एस विल बी इक्वल टू आर जी इंटू आई जी. मैंने ये सारी चीजें क्लास में पढ़ाई है, तुम लोगों को आइडिया भी होगा. दोज हु आर एनेबल स्टूडेंट, दोज हु आर जेनवी नोडल सेंटर से जो लोग आ रहे हो, उनको भी टीचर्स ने पढ़ाया हो. सो दिस इज दिस थिंग. गैल वोल्टमीटर हम कैसे बनाते हैं, वी कनेक्ट विथ गैल्वेनोमीटर ए हाई रजिस्टर इन सीरीज, and this is how we convert galvanometer into voltmeter. So this whole setup is called voltmeter. डन है. सो इन केस ऑफ वोल्टमीटर, जो भी क्वेश्चन दिया रहेगा, यू जस्ट हैव टू कीप इन योर माइंड दैट वोल्टमीटर लुक समथिंग लाइक दिस. ठीक है, सो या लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस. चलो आज हम ज्यादा क्वेश्चन करने वाले हैं. डन है. सो एवरीवन टेक योर प्रॉपर टाइम, नॉट मोर देन 1 minute. I will be launching the poll. You will be careful in the class, giving whole your attention to questions, and you will be solving. चलो, your time starts now. Okay, so far two answers. One is correct, one is incorrect. Why more incorrect answers?
Okay, I need to end the poll now. Question is simply formula based. Formula भी मैंने बताया है previous class में. There is a uniform wire of diameter D. It is given in the question. Diameter is given. Initially it is D. Current of 100 milliampere current is flowing through it. When the mean drift velocity of electron in the wire is V, drift velocity is given V. Now for a diameter, for a wire of diameter D by 2 of the same material, to carry a current of 200 milliampere, the mean drift velocity of electron will be what? So you are asked that now the wire is more thin. So now this diameter is D by 2, and through this you have to allow same current to flow. No, you have to allow 200 milliampere of current to flow, not same current, sorry. Then you are asked what will be the drift velocity in this case. ठीक है. सो फॉर्मूला यूज कर लो, सिंपल है. आई इज इक्वल टू क्या होता है, ए एन ई बी डी. सो फर्स्ट केस में आई कितना है, 100 मिली एम्पियर. मिली एम्पियर को मिली एम्पियर ही रहने दे रही हूँ. एरिया क्या हो जाएगा, एरिया इज दिस क्रॉस सेक्शनल एरिया. सो इन फर्स्ट केस दिस विल बिकम पाई डी स्क्वायर बाई 4 बिकॉज diameter is d, radius will be d by 2. ठीक है. n number of free charge carrier per unit volume, n into e into vd is v. In second case this is 200, area of cross section pi d square by 16. n same hoga because we are using the same material, right? So for same material n will be what, n will be constant. So n is this into e into, let's say this is v dash. So you divide these two, and this will get cancelled, this will get cancelled. What you are going to get, 2 0 से आप cancel कर दो. Half is equal to 16 by 4 into v by v dash. So this is going to give you how much? Sorry, sorry, मैंने कट कर दिया. So v dash is equal to 32 by 4v, and that will give you 8v. So correct answer is what? B. You just needed to use the formula, nothing else. Please do things wisely with whole attention. Please. I'm relaunching the poll. Take your 1 minute or 1.5 minute and let me know. Okay. This is the previous page. Okay, let me turn to the question page. Okay, I got one correct answer. क्वेश्चन हमेशा रिपीट होता है यार, सेम पैटर्न होता है. अभी भी तुम लोगों के पास टाइम है. प्लीज सॉल्व फ्रॉम ईच chapter lots of PYQs. ठीक है, you will get an idea of what sort of questions are coming, what concepts are required, what formulas are required. So I mean, you just need to get into more number of question solving, and test every week, and proper test analysis. These things are very much required. Answer seems incorrect. Maybe you can check with the calculation. चलो ठीक है. Now let's do it together. I've already given you very much time. So there is a uniform metal wire of length L, has 10 ohm resistance. Length is L of this wire and it has resistance of 10 ohm. Now this wire is stretched to a length 12. ठीक है. Let's say initially हमारा wire कैसा था? Initially हमारा wire कुछ ऐसा था. ठीक है. So it has a length of L and now it is stretched. Yes, Raju, correct. Now it is stretched to length 2L.
So when you will stretch to length 12, its area of cross section will decrease, right? So it will decrease something like this, such that its volume will remain constant. So यहाँ पे area of cross section आप A ले लो, length L है, यहाँ पे 12 length है, area of cross section A dash ले लो, बोथ विल शेयर द सेम वॉल्यूम, ठीक है? ये हमेशा याद रखना, जब भी तुम वायर को स्ट्रेच कर रहे हो, व्हाट थिंग इज रिमेनिंग कांस्टेंट? वॉल्यूम। तो वॉल्यूम को इक्वल करके यू कैन कैलकुलेट ए और ए डैश का वैल्यू, ठीक है? सो ए डैश इंटू 12, अगर आप यहां से निकालोगे ए डैश इज ए बाई 2, ठीक है? सो इस 12 लेंथ के वायर का रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? यहाँ पे रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आप क्या लिखोगे? रो एल बाई ए, and here it will be how much? Rho will remain same because same material you have stretched to double length, right? So rho into length को क्या लिखोगे? 2L, area of cross section A by 2. So this is becoming 4 into rho L by A. It means its resistance will be how much? 4 into 10, क्योंकि rho L by A is equal to how much? 10 ohm. So this is equal to 40 ohm. So this wire has a resistance of 40 ohm. This is clear. अब देखो क्या कह रहा है, and this is bent to form a perfect circle. So we are bending this wire to form a perfect circle. तो circle बना दिया. So whole this circle has a resistance equal to 40 ohm. Now the equivalent resistance across any arbitrary diameter of the circle. So diameter of the circle ये होगा, इस दो पॉइंट के अराउंड तुम्हें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है. Whenever you are asked such thing, let's say we have to calculate equivalent resistance across AB. Just connect a battery across AB and try to see two portions that this AB is dividing this circle into are in series or parallel. So यहाँ से current आई जाएगा. Some current will go here, some current will go here. So one is the half portion, another is another half portion. Whole has a resistance of 40 ohm. So this half will have resistance of 20 ohm. This half will have resistance of 20 ohm. Equal currents are going. A और B के cross potential difference क्या होगा? Same होगा, ठीक है? So this 20 and 20 ohm are in parallel. So R equivalent will be how much? 20 into 20 by 400. So this is equal to 10 ohm, है ना? क्योंकि R equivalent क्या करोगे? मैंने directly लिख दिया 1 by R1 plus 1 by R2. So you will get 1 by 20 plus 1 by 20 and that is equal to 2 by 20. यानी कि R equivalent is 10. So correct answer will be your A. ठीक है? चलो. Now do this question. This is from meter bridge and this you got in 2024 itself. Take 1 minute and let me know. ये कुछ नहीं है, तुम लोग इससे कंफ्यूज मत करना, ठीक है? Okay, I got one correct answer, one wrong. You just need to put in the formula. Now I am going to end the poll because कुछ करना है नहीं. The given circuit shows a uniform straight wire AB of 40 centimeter length. So यहाँ पे length given है. AB का length क्या है? Given है. And this is how much? 40 centimeter. ठीक है? In order to get zero reading in the galvanometer, यानी कि balanced Wheatstone bridge बनेगा, the free end of J has to be placed from B at what distance? So let's say J के फ्री एंड को हमने B से L डिस्टेंस पे रखा. अगर L डिस्टेंस पे रख रहे हो, दिस डिस्टेंस विल बिकम हाउ मच? 40 माइनस L, ठीक है? सो नाउ पुट इन द फॉर्मूला. शशांक, check again.
So use the Wheatstone bridge. Resistance of this portion divided by this will be equal to resistance of this portion divided by this. So 8 by 40 minus L is equal to 12 by L. Solve it. पहले इसको आप कट कर लो. So this is 12 is equal to 120 minus 3L. So 5L is equal to uh, okay. Yes. 5L is equal to 120. So L is equal to this 24 centimeter. So correct answer will be what? 24 centimeter. This is your answer, right? So correct answer is your D. कुछ नहीं करना था, फॉर्मूला पुट करना है. मैं बार बार बोल रही हूँ, फॉर्मूला से क्लियर हो जाओ तुम लोग प्लीज. Again, this is a very simple question, so I will be giving you 1 minute only. You just need to put in the formula, getting the answer type question. You just have to calculate potential difference. Puneet, yes, very good. That will be the answer. Okay, I'm ending the poll now because there is no point of giving more time. Just look at here. मैंने बात किया था ना terminal potential difference कैसे निकालते when there is current in the circuit. Terminal voltage of a battery whose EMF is 10 volt, internal resistance 1 ohm when connected through an external resistance 4 ohm as shown in the figure. So terminal voltage of the battery निकालना है. यहाँ पे डायग्राम में क्या कैसा डायग्राम दिख रहा है? यही दिख रहा है ना? This is, and this is 1 ohm. This is how much? Sorry, this is 4 ohm. This is 1 ohm. This is 10 volt. What is current in the circuit first? There is current in the circuit. So 1 ohm and 4 ohm are in series. So 5 ohm. Total equivalent is 5 ohm. Voltage is 10 volt. 10 by 5. That is 2 ampere is the current. Now you have to calculate terminal potential difference. यानी कि potential difference between the ends of battery. ठीक है. Another end I am keeping here because it has internal resistance. So internal resistance is basically the part of battery. It is inside battery. लेकिन draw करते हैं हम उसको outside. ठीक है. So terminal potential difference means इसके और इसके बीच का potential difference निकालना है, जो कि कितना होता है. Again, you don't need to use KVL or anything. Simply use the formula E minus IR. So EMF of this battery is how much? 10 volt. Current in this branch is how much? यहाँ पे current कितना जा रहा है? 2 ampere. So 2 into internal resistance is how much? 1. So 10 minus 2, how much? 8 volt. Correct. इससे easy questions क्या आएगा बताओ? This is the most basic. Again, this is also not difficult. Take your time. Let me know what answers you will be getting. Okay, do it. लैंग्वेज को बस सही से पढ़ना है तुम्हें. Nothing more. Correct. Yes. Yes.
That's great. Very good. Yes. श्रुति, रीचेक करो, कैलकुलेशन रीचेक करो फिर से. ओके. Correct, you are correct. The one you gave previously was correct. So far I got two options, one correct, one incorrect. Okay, let me end the poll. Question क्या कह रहा है बताओ. साई, कैलकुलेशन मिस्टेक है शायद. पुनीत, यस. चलो रीचेक कर लो तुम लोग कहाँ गलती कर रहे हो. लेट्स हैव अ लुक ओवर दिस थिंग नाउ. यस साई, करेक्ट. So there is a wire of length L, and it has a resistance of how much? Raju, need to recheck. It has a resistance of 100 ohm. It is divided into 10 equal parts. So each part will have resistance of how much? 10 ohm. ठीक है. So अब हमारे पास 3 ओम का 10 रेजिस्टर्स है. यस शशांक, करेक्ट. डन है. 10 ओम का 10 रेजिस्टर्स है. फर्स्ट 5 आर कनेक्टेड इन सीरीज. सो पहले 5 को हमने किस में कनेक्ट कर दिया? सीरीज में कनेक्ट कर दिया. ठीक है. दिस इज 10 ओम, दिस इज 10, दिस इज 10, दिस इज 10, दिस इज 10. सो यहाँ पे इसका आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10, दैट इज 50 ओम. और रेस्ट 5 को हमने क्या किया? रेस्ट 5 वी कनेक्टेड इन पैरेलल. सो लेट्स कनेक्ट देम इन पैरेलल. So we are connecting them in parallel like this. ठीक है. सो 10 10 10 इन पैरेलल. सो इसका इक्विवेलेंट क्या होगा? 1/r इक्विवेलेंट क्या लिखोगे? 1/10 प्लस 1/10 प्लस 1/10 प्लस 1/10 प्लस 1/10. So this is equal to how much? 5/10. So r equivalent is equal to 2 ohm. ठीक है. This is the thing, right? Yes, Raju. सो दिस विल बी द थिंग. अब हम कर क्या रहे हैं? अब हम ये कर रहे हैं, इस आर इक्विवेलेंट को और इस आर इक्विवेलेंट को अगेन सीरीज में कनेक्ट कर रहे हैं. सो यू आर कनेक्टिंग टू थिंग्स इन सीरीज नाउ, एंड डू दिस टू थिंग्स आर हैविंग हाउ मच रेजिस्टेंस? 50 ohm and 2 ohm. So what will be the R equivalent? 52 ohm. So correct answer is what? B. That is second one. ठीक है. चलो, do this now. Everybody take your time, do it. Okay. शरद, एक बार फिर से रीचेक करो. Maybe calculation mistake is there. Okay, no answers. मुझे लग रहा है तुम लोग कंफ्यूज हो रहे हैं. Let me end the poll and let me explain this to you. ठीक है. So what is the question? There are two heater. We have two heater A and B. So let's indicate heater like this. So we have two heaters. And their power rating is 1 kilowatt in one case, another is 2 kilowatt in another case. Okay? Those two are first connected in series and then in parallel to a fixed power source. The ratio of power output for these two cases will be how much? Yes, Ruti, correct. ठीक है. तो हमने क्या किया?
फर्स्ट इन दोनों को सीरीज में कनेक्ट कर दिया, यानी कि एक बार ये दोनों ऐसे दिख रहे हैं, दे आर कनेक्टेड टू द सेम बैटरी सोर्स बी, एंड इन अनदर केस these two are connected in parallel and then connected to the same battery. ठीक है, we are asked what ratio power output for these two cases. तो हम पावर आउटपुट निकालेंगे कैसे? ठीक है, साई शशांक एक बार रीचेक करो। सो पावर आउटपुट कैसे निकालेंगे? सपोज कर लो हमें R1 और R2 का वैल्यू पता है, एंड सिमिलरली यहाँ हमें पता है R1 और R2 का वैल्यू. So in first case, what will be the power output? In first case, power output will be पावर का फॉर्मूला क्या पढ़ते हैं? पावर का हम दो फॉर्मूला पढ़ते हैं, आई स्क्वायर आर, या वोल्टेज के टर्म में अगर लिखना है तो वी स्क्वायर बाई आर. सो इन फर्स्ट केस टोटल वोल्टेज बिंग गिवन इज वी. सो R1 और R2 दोनों पे वोल्टेज ड्रॉप का सम कितना हो जाएगा? V. सो आर इक्विवेलेंट R1 प्लस R2. सो फर्स्ट केस में पावर तुम्हारा V स्क्वायर बाई R1 प्लस R2, एंड इन सेकेंड केस इट विल बी हाउ मच? V स्क्वायर बाई R1 R2 का पैरेलल में इक्विवेलेंट. सो अगेन R इक्विवेलेंट that will be equal to R1 R2 by R1 plus R2. So this is how we will calculate it. Now the question is how to calculate R1 and R2. So let's say here power rating is already given. We can calculate power resistance in term of voltage V. ठीक है, सो अगर सपोज कर लो ये वोल्टेज V से ही कनेक्टेड है इनिशियली, एक्चुअली दैट्स नॉट क्लियर इन द क्वेश्चन बट यू हैव टू टेक इट लाइक दिस. सो वोल्टेज V से कनेक्टेड है और पावर कितना दे रहा है? 1 किलोवाट. सो पावर इज हाउ मच? 1 किलोवाट. किलो को मैं कन्वर्ट नहीं कर रही. सो दिस इज इक्वल टू V स्क्वायर बाई आर. सो R इज इक्वल टू हाउ मच? V स्क्वायर बाई 1 किलो ओम. सेकेंड केस में तुम्हारा कितना हो जाएगा? यानी कि R1 ये है, R2 कितना जाएगा बताओ? V स्क्वायर बाई 2 किलो ओम. ठीक है, दिस इज दिस. सो फर्स्ट केस में अगर आप पावर P1 निकालते हो तो V स्क्वायर बाई R1 प्लस R2 करोगे, कितना जाएगा? V स्क्वायर प्लस V स्क्वायर बाई 2, दैट इज 3V स्क्वायर बाई 2, एंड दैट इज इक्वल टू 2/3. P2 कितना होगा बताओ? इन दोनों का तुम पैरेलल में कॉम्बिनेशन निकाल लो. सो पैरेलल में कॉम्बिनेशन कितना होगा? चलो वी स्क्वायर को कांस्टेंट लेके चलते हैं, 1 और 1/2 का निकालो. सो 1 इंटू 1/2, 1 प्लस 1/2. सो दिस इज इक्वल टू हाउ मच? 1/3. ठीक है, सो दिस इज इक्वल टू आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई 3 हियर किलो ओम. डन है. सो P2 का वैल्यू कितना होगा? V स्क्वायर बाई 3. सो दैट इज इक्वल टू हाउ मच? दैट इज इक्वल टू, सॉरी, दिस पावर इज दिस आर इक्विवेलेंट इज 3 एक्चुअली. तुम लोग बताते नहीं, देखो इसका वैल्यू 3 आएगा ना. मैंने गलत लिखा, 1 इंटू 1/2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1/2. सो दैट इज 3 ओनली, 1/3 ओनली, राइट? यस, एक बार चेक कर लेना. सो दैट इज दिस ओनली. सो पावर इज 3 हियर. अब आप इसका रेशियो ले लो. सो P1 बाई P2 विल बी इक्वल टू हाउ मच? 2/3 डिवाइडेड बाई 3. सो दैट इज इक्वल टू 2:9. ठीक है, सो करेक्ट आंसर विल बी दिस. देखो इतना ज्यादा ऐसे जाने की जरूरत नहीं है, मैंने इतना एक्सप्लेन करने के लिए लिखा. पावर सिंपल है, 1 किलोवाट है. सो इसका रेजिस्टेंस हो जाएगा V स्क्वायर बाई 1, इसका हो जाएगा V स्क्वायर बाई 2. सीरीज में दोनों को ऐड कर दो. सो यू विल बी गेटिंग हाउ मच? 3V स्क्वायर बाई 2 इन फर्स्ट केस, एंड इन सेकेंड केस इट विल बी V स्क्वायर बाई 3. फिर पावर का रेशियो निकाल लो. डन है. इट इज दिस इजी. आई होप इट इज क्लियर. किसी को डाउट है प्रीवियस क्वेश्चन में? एनी डाउट? नहीं ना? चलो, ओके साई बोलो. यस, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ, यू कैन से, और लिख भी सकते हो. यस, यू रेज्ड योर हैंड. ओके, वंस मोर एक्सप्लेन करो. ठीक है,
देखो क्या है यहाँ पे, पावर है ना, पावर कितना दिया हुआ है फर्स्ट का, 1 किलोवाट। जब भी पावर रेटिंग दी होती है ना, इट इट इज कनेक्टेड विद सर्टेन सॉर्ट ऑफ वोल्टेज थिंग। डन है। एंड सेकंड का पावर क्या है, 2 किलोवाट। सो जैसे हम जो भी वोल्टेज थिंग यहाँ पे लेकर चलने वाले हैं, जो भी पावर सोर्स लेकर चलने वाले हैं, लेट से हमारा पावर सोर्स है बैटरी, जिसका वोल्टेज है V। ठीक है। सो फर्स्ट बैटरी, फर्स्ट जो हीटर है उसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला है, पावर का फॉर्मूला क्या होता है, V²/R। सो इसका क्या मीनिंग होता है कि व्हेन यू आर कनेक्टिंग दैट पर्टिकुलर मटेरियल विथ अ बैटरी ऑफ वोल्टेज V, देन इट इज गिविंग अस पावर इक्वल टू V²/R, वेयर R इज इट्स रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे हम पावर सोर्स को V लेकर चल रहे, इसलिए फर्स्ट केस में पावर को कितना दे रहा है, 1 किलोवाट, दिस विल बी इक्वल टू V²/1, V²/R। सो R इज इक्वल टू हाउ मच, V²/1 किलो ओम। ठीक है। सेकेंड केस में तुम जाओ, सेकेंड केस में पावर है 2 किलोवाट। सो अगेन 2 किलोवाट विल बी इक्वल टू V²/R2। इसको R1 ले लो। ठीक है। सो R2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, V²/2 वॉट, किलो ओम। अब देखो, अब हमारे क्वेश्चन में ये दिया था कि पहले हमने हीटर को भी कनेक्टेड इट इन सीरीज। सो वी आर कनेक्टिंग R1 एंड R2 इन सीरीज, एंड देन वी आर सीइंग how much power it will give us. Again, same power source is there, V. So this is R1, this is R2. So R equivalent आप निकालोगे, R1 plus R2, so that is V square plus V square by 2. So that is 3V square by 2 ohm. नाउ टू कैलकुलेट पावर, व्हाट यू विल राइट, पावर को हम कैसे निकालते हैं, पावर को निकालते हैं V²/R। सो हियर पावर सोर्स इज V, सो V² होगा यहाँ, और डिवाइडेड बाय R, दैट इज 3V² इंटू 2। V² कैंसिल होगा, सो यू विल बी गेटिंग 2/3 किलो वॉट इन फर्स्ट केस। ठीक है। सेकेंड केस में हमारे पास क्या था, दोनों को ही हमने पैरेलल में कनेक्ट कर दिया। ठीक है। एंड अगेन इट इज कनेक्टेड टू द सेम पावर सोर्स। डन है। कैलकुलेट द आर इक्विवेलेंट। सो आर इक्विवेलेंट क्या होगा, R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। ठीक है। R1 इंटू R2 कितना होगा, V² इंटू V²/2 डिवाइडेड बाई V² प्लस V²/2। सो दिस विल गिव यू हाउ मच, सो दिस विल गिव यू V², एक V² तो कैंसिल हो जाएगा, या फिर यहाँ पे चलो मैं लिख देती हूँ V4/2 डिवाइडेड बाई 3V²/2। तो टू टू कैंसिल होगा, एक V² से V² कैंसिल होगा, सो V²/3। so what will be the power, power will be power source का square, that is V का square divided by R equivalent, that is V²/3। so this is equal to 3 kilowatt. So in first case it is 2/3 kilowatt, in second case 3 kilowatt. Take the ratio, you will be getting 2:9. So correct option is B. Is it clear? Is it clear now? Yes, let me know. If not, I will explain. But if it is clear, then let me know. Sai, is it done? Okay, let me know. In the meantime, do this question. ठीक है? Okay, thank you. Again, this is from the series combination of cells. मैंने कल की क्लास में ही तुम लोगों को बताया, प्रीवियस क्लास में, कि इसको कैसे क्रैक करना है इजिली।
Yeah, anyone with the answer? Puneet, yes, very good. Others, please. Two correct answers so far. Two answers, both are correct. Very good. चलो सभी लोग आ जाओ लाइन में. Everyone, let me know your answers, please. Okay, okay. Okay, I'm ending the poll now. So, what is the question here? अगर क्वेश्चन को आप ध्यान से देखो, yes, Sai, that's correct. So, यहाँ से अगर ध्यान से देखो, we have two cells in the series, right? Again, I'm revising this thing. अगर तुम्हारे पास सिंगल लूप सर्किट है, यहाँ पे एक ही लूप है, वन लूप सर्किट है. Whenever you have single loop circuit and in that circuit you have more than one battery, then how to solve the circuit? Simply check the orientation of करंट फ्रॉम ईच बैटरी. सो पहला बैटरी तुम्हारा कैसा है, उसका पॉजिटिव टर्मिनल ये है, नेगेटिव ये है. इट हैज टेंडेंसी टू सेंड करंट इन दिस डायरेक्शन. 5 volt battery has tendency to send current in this direction. Both have opposite tendencies. It means इनके EMF क्या होंगे, सब्सट्रैक्ट होंगे. सो जो नेट सर्किट बनाओगे, उस सर्किट का नेट EMF कितना जाएगा, 10 - 5 5 volt with orientation in the direction of 10 volt. So मैंने यहाँ पे गलत बनाया है. ओरिएंटेशन मुझे किसके डायरेक्शन में देना होगा, 10 volt के डायरेक्शन में. So it will look like this. Now write whatever is there. So this is 1 ohm, then there is 2 ohm, this is 1 ohm, and then there is 7 ohm. If there is single loop circuit, it means all the resistors are in series. So here all the resistors are in series. R equivalent is 10 ohm. ठीक है. Current will be how much? Battery voltage 5 by R equivalent 10, half, that is 0.5 ampere, and current will move in this direction. It means in this direction, ऐसे, it means from A to B. So correct option will be 1. ठीक है. चलो. Now do this question. Let me know your answers. Okay, one answer, but it isn't correct. You need to recheck. Both the answers are incorrect. Okay. Not again much to do in the circuit. You just need to look at the diagram. Yes, one correct answer. Okay, let me end the poll. क्योंकि अगर आएगा तो within 1 minute it will happen. Puneet, yes. Stephen, yes. No, Stephen, you need to recheck. एक बार recheck करो. तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, देर इज नो डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर. इसका क्या मतलब है, इसका शरत नो, इसका सिंपल मतलब ये है कि दे वोंट बी करंट गोइंग इन द गैल्वेनोमीटर आर. इट मीन्स बैटरी यहाँ है, करंट सपोज यहाँ से आई निकल रहा है. सो वॉट एवर करंट इज कमिंग हियर विल गो हियर, बिकॉज in this arm there is no current. So if here current coming is I, here also current going will be I, because no current is going in the galvanometer arm. First thing. Second thing, there is a battery connected here, 2 volt, and this thing is in parallel with this thing, है ना, क्योंकि बीच में कुछ ऐसा है नहीं जिसपे पोटेंशियल ड्रॉप किया है.
because G has no current flowing through it. It means इस पे अगर current flow करता, then there would have been potential. How much? RGI dash, whatever current would have been here, right? There is no current. It means this value is zero, no potential drop. So in between this point, let's say this is A, this is B, potential of point A and potential of this point O will be same because between A and O, there is no potential drop. Done it? So O का potential A के जैसा होगा, B का potential P के जैसा होगा, because between B and P again there is conducting wire, no potential drop. It means if potential difference between A and B is 2 volt, here also between O and P is 2 volt. So across R, potential difference is how much? 2 volt. ठीक है, इसका मतलब I का वैल्यू कितना हो जाएगा? 2 by R. We can say, right? I का वैल्यू क्या होगा? 2 by R. और सर्किट से I का वैल्यू if you calculate, then I will be equal to battery value is 10 ohm. Current flowing through the circuit is, I mean, R equivalent in the circuit is 400 plus R, because this is a single loop circuit, right? This is a single loop circuit. This circuit is like this. क्योंकि इधर तो करंट जा नहीं रहा, उसको हटा के देख लो. So this is 400, this is R, and this is 10 volt. So current will be 10 by 400 plus R, and this is equal to 2 by R. ठीक है. So 10R will be equal to how much? 800 plus 2R. So this is 8R is equal to 800, यानी कि R is equal to 100 ohm. So correct answer will be which one? It will be B. Okay. ठीक है. So these are the things. Correct option यहाँ पे आप डाल दो B में. ठीक है. Everyone check the chat box. You are asked to fill. I mean, you are asked to share your feedback. So please fill this feedback form. ठीक है. I mean, you just click on the link, have it saved in your device. After the class, you can fill it. ठीक है. चलो. Now let's do this question. Again, this is also a formula based question. आप लोग करो. Take your time, do it. There is no hurry, no worry. ठीक है. Subhas, you have directly messaged this to me actually. You need to message it to everyone. Yeah, I can't able to make everyone to the message. That's why I directly sent you. Okay, okay, okay. Then I will do something. Uh, can you copy and paste to everyone? No, Yeah, copy yeah, paste. Mm. yeah, yeah. I'll try. That's why I directly to you. Yeah, yeah, yeah. No worries. Okay. मैं देती. ठीक है. And tell them student after the class, please fill the form. Okay. Yeah, yeah, sure, sure. Yeah. Yes, Raju. Okay, just give me some time. Everyone is able to see the screen? सब लोग screen देख पा रहे हो, right? It visible. Yeah, yeah. ठीक है. Question is visible, right? Yes, yes, yes. Yeah, okay. Yeah, Shruti, that's correct. Raju, you need to recheck. एक बार recheck करो calculation. Okay, we should now I should end the poll. ठीक है, क्योंकि we have already taken 2 minutes. Shreya, yes, that's correct. Very good. चलो अब चेक करते हैं. क्वेश्चन में कुछ नहीं करना. यू हैव टू जस्ट पुट इन द फॉर्मूला एंड गेट द आंसर. फॉर्मूला क्या है? रेजिस्टेंस ऑफ प्लैटिनम वायर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड इज 2 ओम. सो आर नॉट का वैल्यू 2 ओम है, यानी कि एट वन टेम्परेचर दैट इज 0 डिग्री
it is 2 ohm, and 6.08 ohm at 80 degree. So at 0 degree it is this, at 80 ohm, 80 degree centigrade it is 6.8 ohm. The temperature coefficient बताना है. So देखो एक फॉर्मूला मैंने बताया था, resistance value at any temperature T is equal to resistance value at temperature 0 degree you can say, or at one temperature into 1 plus alpha delta T. So here RT को मैं क्या लिखने वाली हूँ, temperature resistance at 80 degree that is 6.8 is equal to resistance at 0 degree that is 2, 1 plus alpha. Temperature difference क्या होगा बताओ, टेम्परेचर डिफरेंस इज 80 माइनस 0 डिग्री, तो 80 माइनस 0 दिस. ऑलवेज रिमेंबर जब भी फॉर्मूला ऐसा होता है ना, आर इज इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी. So basically this R naught is resistance at the lower temperature, this R naught is resistance at higher temperature generally. ठीक है, so then you can put in the formula, get the answer. यहाँ पे अगर अब आप पुट करोगे, so this will become 4.8 and this is 4.8 इसलिए मैंने किया क्योंकि यहाँ पे 6.8 है, 2 प्लस 2 अल्फा इंटू 80. तो 6.8 माइनस 2 करोगे तो 4.8 एंड दिस इज 160 अल्फा. सो अल्फा इज इक्वल टू 4.8 बाई 160. सो दिस विल बिकम हाउ मच, 3 टाइम्स से कट कर दो, सो दिस विल बिकम 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2. तो अल्फा का वैल्यू क्या हो जाएगा, you just needed to put the formula. Is it clear everyone? Clear है सबको, or anyone is having any doubt? If yes, let me know. किसी को डाउट है? Nobody? ठीक है, डाउट हो तो मुझे बता दो. Now do this question. This is from electrostat. एनर्जी स्टोर्ड का फॉर्मूला सबको पता होगा इलेक्ट्रोस्टैट के लिए. तो E इज इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर. Okay, in the group I have sent one feedback form. I just request everybody to fill it after you are done with the question. ठीक है. Okay, Sarath. That doesn't feel correct. एक बार रीचेक करो. श्रुति. Yes, very good. Very good. शरद फॉर्मूला चेक करो. आंसर तुम्हें ना नैनो जूल में लाना है. ठीक है, नैनो जूल में आंसर लाना है. नैनो मीन्स 10 टू द पावर माइनस 9 जूल के टर्म में आंसर लाना. ठीक है, आई मीन 10 टू द पावर 9, 1 नैनो जूल का मतलब होता है 10 टू द पावर माइनस 9 जूल. सो सम नैनो जूल विल बी द आंसर. दैट्स द केस. ओके, आई गॉट 3 आंसर्स, ऑल आर इनकरेक्ट. क्या हुआ, तुम लोग सिंपल करो ना. यहाँ पे 20 पिको फैराड कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू 50 वोल्ट बैटरी. इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड का फॉर्मूला क्या है, हाफ सी पी स्क्वायर. सिंपल है, पुट करो. हाफ सी का वैल्यू क्या है, 12 पिको फैराड. पिको मीन्स 10 टू द पावर माइनस 12. वी वोल्टेज इज हाउ मच, 50 into 50. This one you put there, right? So this is this. If you are going to calculate it, this will become 6 into 5, 30. 30 into 5, 150 into 100 into 10 to the power minus 2. So यहाँ से 3 जीरो इधर लेकर जाओ, it will become 15 into 10 to the power minus 9 joule. And this is equal to 50 nano joule. So this is going to be the answer, right? Sai, yes. Correct. Yes. Now that's correct. ठीक है, तो कल की क्लास में हम क्या करेंगे,
I will take you through more capacitor questions, and after that we will start with another chapter. But first we will do capacitor questions, some more. Okay? There is 1 minute left. I will request everybody to what? To I mean fill that feedback form. Those who are done, they can give me thumbs up. Please do it, yeah. Just that will take you 1 minute, not more than that. Even less than that. ठीक है? जिसका हो जाए मुझे थम्स अप कर देना, और किसी को इन द मीन टाइम डाउट है वो लोग पूछ लो, कुछ भी पूछना हो बता दो. Anyone confused regarding anything? टेस्ट कैसा जा रहा है? If you want to discuss anything, कैसे करें ये पूछना है, you can ask. परेशान हो, you can let me know. ठीक है? Okay, I'm waiting for your responses. तुम लोग फिल कर चुके हो? फिल कर दिया फॉर्म? और it is still happening? You can take your time, do it, but please make sure you are clicking on the link or you're saving the link. Okay, you can do it a bit later also, but make sure that link is with you. Chalo. Everyone take care of yourself. Stay safe, healthy, keep solving more number of questions, and keep being attentive in classes. Okay. Okay, get ready for the next class. Bye everyone. Take care of yourself. Bye bye.